Hello students, welcome to my channel. And in last video we have discussed the structure of pollen grains and how these are made and how these are formed inside the anthers and how they pollinate from their main origin to the stigma of the other flower. Now we are going to discuss the gynoecium part. This is the female part of the flower. Now discuss. So you can see a standard flower in which you can see the androecium, that is the male part, and the gynoecium, that is the female part. And now point of discussion is gynoecium means stigma, the entire gynoecium, this the stigma and this ovary, right? Okay. The term pistil means you can see many variations in the gynoecium of different flowers. For example, the gynoecium can be monocarpous, consisting of a single pistil or carpel. Or it may be multicarpous, in which case we see several pistils in a single flower. Whenever the term pistil is used, pistil means the entire gynoecium. And what is entire gynoecium means? Female part. तो how many जब इसको बोलेंगे ना मल्टीपल पिस्टल्स, यानी एक ऐसा बंच है जिसमें खूब सारे गाइनोशियम लगे हैं, तो ये भी एक तरह का फ्लावर है. मोनोकार्पस या पिस्टिलेट, मोनोपिस्टिलेट सिंगल होंगे, जब बहुत सारे हैं तो मल्टीपल पिस्टल्स हैं. देखें. Moreover, a multicarpellary gynoecium may be apocarpous, that is, the pistils are free, or syncarpous, where the pistils are fused. सारे के सारे पिस्टिल, हम जिसको पिस्टिल बोल रहे हैं वो क्या है? ये टर्म है, राइट? पूरा पिस्टिल, राइट? तो जब पिस्टिल फ्यूज्ड होगा, मतलब खूब सारे एक साथ लगे होंगे बंच में, तो क्या बोलते हैं? सिंकार्पस. और जब एक निकलकर अलग अलग हो गए तो क्या बोलेंगे? एपोकार्पस. याद रखेंगे, जब बंच में आ गए सारे के सारे तो क्या बोल देंगे? सिंकार्पस. और जब पिस्टिल अलग अलग बाइफर्केट हो गए तो क्या बोलेंगे? एपोकार्पस. नाउ if you observe the structure of a pistil, you will find that it consists of the stigma at the tip, followed by the style in the middle and an ovary at the base. While the stigma is a landing platform for pollen grains, the style, an elongated slender structure, connects the stigma to the ovary, the basal bulging part of the pistil. Morphological studies of the ovary have revealed that it contains one or more cavities called locules, or ovarian cavities that are surrounded by an ovary wall. क्लियरली अब जरा समझें. जो ओवरी का पार्ट है देखो कैसा है. अगर ओवरी आपको ऐसे दिखाई पड़े साइड से, ये कैसा है? ये LS है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, यानी किसी ओवरी को आपने ऊपर से नीचे तक काट दिया है, राइट? और इसी का ये क्या दिखा रहा है? ट्रांसफर्स सेक्शन, इसको बीच से कट करके दिखाया जा रहा है ऐसे. तो जो ऐसे दिख रहा है आपको ट्रांसफर्सली ऐसे दिखाई पड़ेगा. और ये देखो ये भी एक ओवरी का पार्ट है जिसको ट्रांसफर्स सेक्शन से ऐसे देख रहे हैं. ये देखो बीच में ये पार्ट है इसका, राइट? तो ओवरी के सेक्शन है ये, अलग अलग तरह के दिखाया जाता है कि स्टैंडर्ड हमने ओवरी ले ली ये वाली. इसमें क्या दिख रहा है? ठीक है, ओवरी के स्पेस है ये. इस स्पेस के बारे में बात करेंगे. किसी किसी में स्पेस होगा ऐसे होगा, किसी में साइड में होगा, किसी में यहाँ तक वो लगे होंगे आपके ओव्यूल्स, राइट? ओके, बात करें फिर से. The locule, you will find ovules or megasporangia that are attached to the ovary wall in a region called the placenta. बीच का सेक्शन प्लेसेंटा होता है. These ovules may be arranged in free central, axial, marginal, parietal, or basal placentation. You are very well known of placentation. Moreover, now after fertilization, the ovules form seeds while the ovary develops into a fruit. जितने ओव्यूल होते हैं याद रखेंगे,
जो आपने अभी भी देखा, जो सबसे नीचे का सेक्शन होता है, ये मान लो कि गाइनोशियम है, नीचे का पार्ट क्या होता है, ये इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी में तुमने देखा कि यहाँ पर बीच में ओव्यूल्स हैं बहुत सारे, तो ओव्यूल्स बनाएंगे सीड्स, और ये पूरा ओवरी जो होता है, ये पूरा ओवरी ये बनाएगा पूरा का पूरा फ्रूट। तो बीच के सेक्शन जो होते हैं जिसमें खूब सारे छोटे छोटे ओव्यूल्स दिख रहे होंगे ऐसे करके, तो वो क्या थे, वो थे सीड्स बनाएंगे फाइनली, और पूरा का पूरा ओवरी बन जाता है फ्रूट। और बाकी जितना भी फ्लावर के पार्ट्स हैं, जितना भी ऑल द वर्ल्ड्स आफ्टर बिकमिंग फ्रूट, दे जस्ट शेड आउट, राइट। Did you know that different flowers of different plant species have a varying number of ovules in their ovaries? A peach, for instance, develops from an ovary containing a solitary ovule. A papaya, on the other hand, has several ovules in its ovary, and that's why you see numerous seeds in the fruit when it is split open. The ovule, considered by botanists as the forerunner of the seed, has an oval or egg-shaped body. It remains attached to the placenta by a stalk called the funicle. Is the funicle? In fact, the ovule's body fuses with the funicle in a region called the hilum. The ovule is well protected with one. अब ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये एक ओव्यूल की बात है, वन ओव्यूल, वाज इट, ये एक ओव्यूल है। ऐसे करके बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं ना। Or two protective coverings called integuments. इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ओव्यूल के These integuments later form the seed coat. सीड कोट बना देंगे लास्ट के। The integuments cover the entire ovule except at the apex, where they form a narrow opening called the micropyle. एक ओपनिंग होती है ओव्यूल के नीचे। Did you know that the micropylar end acts as an entry point for the pollen tube during the process of fertilization? While the micropyle forms one end of the ovule, the Cl-Xii forms the basal part of the ovule. Cl-Xii या Cl-Xii दोनों बोल सकते हैं टर्म। At the Cl-Xii region, we find that the funicle and integuments join the nucellus, the center region of the ovule that's made of a mass of diploid, colorless, thin-walled parenchymatous cells containing food reserve materials. टर्म दिया है पैरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमा जब भी हम टर्म लेंगे, याद रहेगा, डिस्कशन कर चुके हैं 11th के पार्ट में, जब भी हम पैरेन्काइमेटस की बात करते हैं मानिए वहाँ पर फूड रिजर्व है, क्या रहेंगे, फूड स्टोरेज है। तो जहाँ भी पैरेन्काइमेटस सेल रहते हैं, देखें खास तौर पे ये जो इनका गाइनेशियम पार्ट है, जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो उनमें फूड रिजर्व भरा रहता है, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत होती है एनर्जी की, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर उसको मियोसिस भी करनी है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करना है, बार बार मल्टीप्लाई करना है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो पैरेन्काइमेटस है यहाँ पर, मतलब एनर्जी है यहाँ पर, फूड रिजर्व है। In the nucellus of a mature ovule lies the embryo sac, the female gametophyte, which develops from a megaspore. This megaspore is formed when one of the nucellus cells, towards its micropylar end, gets differentiated into a megaspore mother cell. देखें, ये जो पूरा दिखाया गया ये एक ओव्यूल है, करेक्ट, एक ओव्यूल को दिखाया गया यहाँ पर, और एक ओव्यूल के अंदर क्या है इसके बारे में बात की गई है, राइट। ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से इसको कंसीडर करेंगे। Which can be easily distinguished from other cells due to its large size, dense cytoplasm, and prominent nucleus. The megaspore mother cell undergoes meiosis to form 4 megaspores which arrange themselves in a linear tetrad. This process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. मेगास्पोरोजेनेसिस, ये फीमेल पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, और जब कहते हैं पॉलेंस के लिए तो हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे,
ठीक है ना, माइक्रोस्पोर बनते थे, यहाँ पे क्या बने मेगा स्पोर, मेगा फीमेल के लिए, माइक्रो मेल्स के लिए टर्म ले रहे हैं, तो मेगा और माइक्रो दो टर्म है। Of the four megaspores, usually the one near the chalazial end becomes functional, whereas the other three near the micropylar end degenerate. The functional megaspore enlarges. टेट्राइड बनता है, आपने देखा मेगास्पोर मदर सेल से 4 सेल्स बने जिनको बोला गया टेट्राइड, जिसमें कि 3 डीजेनरेट हो गए, एक बचा, जो एक बना है चैलेजल एंड की तरफ, वही आपको कहा जाएगा एंटायर। अब यही एक कंप्लीट सेल होगा, और यहीं पर अब अंदर ही अंदर डिवीज़न होंगे, न्यूक्लियर डिवीज़न। न्यूक्लियर डिवीज़न होंगे तो यहाँ पर 8 न्यूक्लियस डेवलप होने, कितने न्यूक्लियस डेवलप होने हैं, 8 न्यूक्लियस डेवलप होने। जब 8 न्यूक्लियस डेवलप हो जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, 8 न्यूक्लियस यानी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज बननी है, और जब ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनती है तो यही मैच्योर कहलाता है, राइट। और इसी स्टेज पे आता है कौन सा, पॉलन ग्रेन आएगा और इसको फर्टिलाइज करेगा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज पे पॉलन ग्रेन आता है, ओव्यूल को फर्टिलाइज करता है। And simultaneously undergoes mitotic division to form an embryo sac. This type of formation of the embryo sac from a single megaspore is known as monosporic development.